Today we will know about William Shakespeare. William Shakespeare is a common writer who is always asked in GIC, LT, lecturer and all TGT, PGT exams of any state. So let's know some important facts about his life. Yes. So as we know, he was born in 1564 and died in 1616. His birth 23rd April 1564 in Stratford upon Avon, river's name, in the county of Warwickshire. How important this question is that asked in 2005, 10 and 9 in PGT exam. He was baptized at Holy Trinity Church, Stratford on 26 April 1564. Stratford is a village in Warwickshire, surrounded by Forest of Arden, Castle of Warwick and Castle of Kilcolman from three sides. अब इसके बारे में ये एक नदी का नाम है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, यहाँ पे इसका जन्म हुआ था। वार्विकशायर काउंटी है वहीं पे, और इसके पेरेंट्स he was the third child of John Shakespeare, an alderman and a successful glover, originally from Snitterfield, and Mary Arden, the daughter of an affluent land-owning farmer. क्या है कि विलियम शेक्सपियर की माँ एक बहुत ही धनी और मीन्स जमींदार की बेटी थी, और इनके पिता एक नगर के शासक थे और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। Let's know about his education. At the age of 7, he was sent to the grammar school at Stratford, where he picked up small Latin and less Greek. 7 वर्ष की उम्र में एक स्कूल में गए, लैटिन मीन्स ग्रामर स्कूल नाम था स्ट्रैटफोर्ड में, जहाँ पे इन्होंने छोटा सा लैटिन यानी बहुत कम लैटिन और बहुत कम ग्रीक सीखा। यस, लेट्स नो अबाउट हिज स्पाउस एंड चिल्ड्रन. At the age of 18 in 1582, he married the 26-year-old Annie Hathaway, मीन्स 26 साल की एक औरत एन हैथवे। इन्होंने इनसे शादी किया और इनसे 3 बच्चे प्राप्त किए। पहली बेटी का नाम सुजाना, जो कि शादी के 6 महीने बाद ही उसका जन्म हो गया। इसके मतलब ये है कि एन हैथवे वाज ऑलरेडी प्रेग्नेंट बिफोर हर मैरिज, एंड आफ्टर दैट उसके 2 जुड़वा बच्चे हुए जिसका नाम हैमनेट एंड जूडिथ। हैमनेट डाइड ऑफ अननोन कॉजेज एट द एज ऑफ 11. सुजाना वाज मैरिड टू जॉन हॉल, ए फिजिशियन, इन 1607. एक प्रश्न बनता है कि सुजाना की शादी किससे हुई थी। तो सुजाना वाज मैरिड जॉन हॉल, एक डॉक्टर था, फिजिशियन, 1607 में हुई थी। और जूडिथ की शादी हुई थी टॉमस क्वीनी के साथ, ए विंटर 2 months बिफोर शेक्सपियर डेथ। शेक्सपियर की मौत से 2 महीने पहले ही शेक्सपियर ने अपने सारे बच्चों की शादी अपने इंतकाल से पहले ही कर दिया था। यस, लेट्स नो अबाउट हिज डेथ. He died on 23rd April 1616 at the age of 52. 52 वर्ष की उम्र में शेक्सपियर की मृत्यु हुई थी। This question has been asked in several exams. He was buried in the chancel of the Holy Trinity Church 2 days after his death. 2 दिन के बाद में उसका शव दफनाया गया था। The epitaph on his gravestone reads, उसके कब्र पे ये लिखा हुआ था, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वी आर
to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. उस समय यह एक प्रचलन था कि कुछ दुष्ट लोग हड्डियों को खोद के लेके जाते थे, मुख्य रूप से जो बहुत प्रचलित और विख्यात व्यक्ति होते थे। तो शेक्सपियर ने पहले यहाँ पे लिखवा दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरे कब्रगाह पे ये लिख दीजिएगा, टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, कि अगर जो इन हड्डियों को, जो इन अवशेषों को खोदेगा, प्लीज गुड फॉर फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वियर, इसको मत खोदिएगा, छोड़ दीजिएगा। ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स, मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ जो इन हड्डियों को न खोदे या मेरे पत्थरों को न निकाले, और अगर ऐसा जो करता है, एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव माई बोन्स, उसका नाश हो जाए जो मेरी हड्डियों को चुराए यहाँ से। तो विलियम शेक्सपियर ने ये एपिटॉप अपने कब्रगाह पे लिखने के लिए कहा था और ये लिखा था। यस, शेक्सपियर हैज बीन commemorated in many statues and memorials around the world, including funeral monuments in Southwark Cathedral and Poets' Corner in Westminster Abbey. Sobriquet, sobriquet means दूसरा नाम, यानी उसका जो उपाधि था वो क्या था, निकनेम को सोब्रिक्वेट कहते हैं। शेक्सपियर इज ऑल्सो कॉल्ड बार्ड ऑफ हेवन। Occupation, the English Elizabethan poet, actor and Renaissance playwright. ये इसका occupation था। Some important points about the author. Between 1585 and 1592, he began a successful career in London as an actor, writer, and in 1594 he joined as an acting troupe called the Lord Chamberlain's Men. In 1603 the group was renamed the King's Men after King James I. In 97 he purchased new place in Stratford. In 1599 a partnership 1/10 share of company members built their own theatre on the south bank of the river Thames, which they called the Globe. He became part owner of the Globe and Blackfriars Theatre. He had several patrons. One of them was the handsome gallant Earl of Southampton, हेनरी रिचली, जिसको हम हेनरी रिचली के नाम से जानते हैं, to whom many of his sonnets and poems are addressed. In 1623, John Hemmings and Henry Condell, two friends and fellow actors of Shakespeare, published the first folio that included 36 plays. Pericles, Prince of Tyre, was not included in the first folio. How this question asked in 2016. Around 1590s, he wrote 154 sonnets. How many sonnets? 154 sonnets, which were published collectively on 20th May 1609 by Thomas Thorpe. Yes. For his legendary and historical material, Shakespeare depended mainly on Holinshed's chronicles of England, Scotland and Ireland, and also on Sir Thomas North's 1579 translation of Plutarch's Parallel Lives. Love's Labour Lost, A Midsummer Night's Dream, The Merry Wives of Windsor and The Tempest are Shakespeare's original plots. His four great tragedies, let's know, yes. In exam, this question asked Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth.
His four great comedies, Much Ado About Nothing, Twelfth Night, The Merchant of Venice, As You Like It. And what are his Roman plays? Yes, Coriolanus, Julius Caesar, Antony and Cleopatra. And his dramatic romances, his last four plays are called tragic comedies, Pericles, Cymbeline, The Winter's Tale, and The Tempest. In 1896, Frederick S. Bosch coined the term problem plays to refer to his three plays, All's Well That Ends Well, Miser for Miser, Troilus and Cressida. His last major tragedies, Antony and Cleopatra and Coriolanus, contain some of Shakespeare's finest poetry and were considered his most successful tragedies by the poet and critic. T.S. Eliot, who called his tragedy Macbeth an artistic success, and other tragic play, Hamlet, an artistic failure on the basis of objective correlative. Shakespeare played the role of Adam in As You Like It, Ghost, Hamlet's father, in Hamlet, and the chorus in Henry V, King Duncan in Macbeth. शेक्सपियर ने स्वयं रोल निभाया था एज यू लाइक इट, एक ड्रामा है शेक्सपियर की, उसमें एडम बना था, हैमलेट में भूत बना था, हैमलेट का पिता जो है सीनियर हैमलेट, और हेनरी फिफ्थ में कोरस बना है स्वयं अपना, और मैकबेथ में किंग डंकन बना है. एक्चुअली ही वाज एन एक्टर टू besides writer. Yes, with 4042 lines and 220,950 means 29,551 words, Hamlet is the longest Shakespearean play with 1787 lines and 14,369 words. The Comedy of Errors is the shortest plays. हमने यहाँ जाना कि विलियम शेक्सपियर की सबसे जो लंबा ड्रामा है वो हैमलेट है और सबसे छोटा ड्रामा कॉमेडी ऑफ एरर्स है. यस, Love's Labour Lost has the highest percentage of rhyming lines of all of Shakespeare's plays. According to Shakespearean scholar Tucker Brook, 62.2% of the lines in Love's Labour's Lost rhyme. The closest competitor is A Midsummer Night's Dream with 43.4% rhyming lines. William J. Long has divided his literary career in four periods. A period of early experimentation, a period of rapid growth and development, a period of gloom and depression, a period of restored serenity of calm after a storm. Yes. In the late 19th century, Edward Dowden classifies in his book Shakespeare, His Mind and Art, 1875, Shakespeare's literary career into four periods: in the workshop, in the world, out of depth, on the heights. The following chronology of Shakespeare's plays is based on the Oxford Companion to Shakespeare by Michael Dobson. Comedy, 1590-91, Two Gentlemen of Verona, 1991, Taming of the Shrew, 94, The Comedy of Errors, 1594-95, Love's Labour's Lost, 1595, A Midsummer Night's Dream, 1596, The Merchant of Venice, 1597-98, The Merry Wives of Windsor, 1598, Much Ado About Nothing, 1599, 1600, As You Like It, 601, Twelfth Night Are What You Will, 1603, Measure for Measure, 1604 and 5, All's Well That Ends Well, 1609, Winter's Tale, 1611, The Tempest. And let's know about his history, please. Yes. 1591, Henry VI, Part 2. 1591, Henry VI, Part 3.
1592 हेनरी सिक्स पार्ट 1, ये इसमें उल्टा है, पहले पार्ट 2 लिखा, फिर पार्ट 3 लिखा, फिर पार्ट 1 लिखा. हाउ अपोजिट ही रोट. 1592-93 the tragedy of Richard III. 1595 the tragedy of King Richard II. 1596 the life and death of King John. 1596-97 King Henry IV part 1. 1597-98 Henry IV part 2. 1598-99 the life of Henry V. 1613 Henry VIII, or all is true. All is true, yes. And let's know some his tragedy. The tragedy of Titus Andronicus, 1592-93. The tragedy of Romeo and Juliet, 1595. The tragedy of Julius Caesar, 1599. The tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, 1601. The history of Troilus and Cressida, 1602. The tragedy of Othello, the Moor of Venice, 1603-1604. The tragedy of King Lear, 1605. The life of Timon of Athens, 1605. The tragedy of Macbeth, 1606. The tragedy of Antony and Cleopatra, 1606. Pericles, Prince of Tyre, only partly by Shakespeare, 1607. The tragedy of Coriolanus, 1608. The tragedy of Cymbeline, 1610. 1610 में द ट्रेजेडी ऑफ सिम्बेलिन आई थी, 1608 में द ट्रेजेडी ऑफ कोरियोलानस आया था. यस. सो 1613 and 1614. 1613 means 1613. The two noble kinsmen co-authored with John Fletcher poetry. 1593 में वीनस एंड एडोनिस की रचना हुई थी. 1594 में द रेप ऑफ लुक्रेसी. 1599 में सोनेट्स टू सन्ड्री नोट्स ऑफ म्यूजिक. 1599 में द पैशनेट पिलग्रिम. 1601 में द फिनिक्स एंड द टर्टल. 1609 में ए लवर्स कंप्लेंट. 1609 में द सोनेट्स. 1612 में फ्यूनरल एलिजी बाई W.S. मीन्स विलियम शेक्सपियर. द फोलियोज ऑफ शेक्सपियरियन प्लेस. The earliest texts of William Shakespeare's works were published during the 16th and 17th centuries in quarto or folio format. Folios are large, tall volumes. Quartos are smaller, roughly half the size. Folio. A folio is a book in which each sheet is folded over only once through the middle, forming two leaves or 4 pages. The first folio has 454 लीव्स. कहता है कि फोलियो एक किताब होती है जिसमें एक बड़ा सा सीट मुड़ा हुआ होता है. कैसे? ओनली वंस थ्रू द मिडिल, बीच में से एक बार वो मुड़ा होता है, जिससे 2 पत्तियां बनती हैं, फॉर्मिंग 2 लीव्स. 2 लीव्स बनेगा यानी कि 2 पेज बनेगा. 2 पेज मतलब 4 पन्ने, या 2 पन्ना बनेगा, जिससे इसका मतलब 4 पेज. और फर्स्ट फोलियो में 454 लीव्स था. इतनी बारीकी से क्वेश्चन पूछता है. सो हमने ये भी पढ़ा कि फोलियो बड़ा होता है, ये टाल वैल्यूम होता है, जबकि क्वार्टो छोटा होता है. ए क्वार्टो इज ए बुक इन विच 8 पेजेस आर प्रिंटेड ऑन द सिंगल शीट which is folded twice to form 4 leaves. The average quarto contains about 100 pages. द फर्स्ट फोलियो 1623 में पहला फोलियो आया हेमिंग्स एंड कॉन्डेल के द्वारा. सेकंड फोलियो किसके द्वारा आया? एलॉट विलियम एस्प्ली के द्वारा आया. 1632 में आया था. और रिचर्ड हॉकिंस ने, रिचर्ड मेन ने और जॉन स्मिथविक ने, इन लोगों ने लिखा था सेकंड फोलियो, मतलब इनके द्वारा पब्लिश हुआ था. द थर्ड फोलियो 1663 में आया. फिलिप चैटविंड पब्लिशर थे. द फोर्थ फोलियो 1685 में आया.
फर्स्ट फोलियो 1623, सेकंड फोलियो 1632, थर्ड फोलियो 1663 और फोर्थ फोलियो 1685 में। अभी किसके कौन प्रिंटर थे, उस पब्लिशर थे और बेंटली, ई ब्रूस्टर और चिसवेल एंड एच हैरिंगन। द टू नोबल किंग्समैन। तो लेट्स फिनिश इट। The two noble kinsmen did not appear in any folio edition, was not printed until 1634, although there is evidence of its being performed much earlier. 19 of William Shakespeare's plays first appeared in quarto before the publication of the first folio in 1623, 18 of those before his death in 1616. One play co-authored with John Fletcher, The Two Noble Kinsmen, was first published in 1634, and one play first published in the first folio, The Taming of the Shrew, was later published in quarto. Some famous books on Shakespeare: Hamlet and His Problems by T.S. Eliot, Shakespeare in the Classroom by Theodore Dwight Weld, Shakespearean Tragedy 1904 and Oxford Lectures on Poetry 1909 by A.C. Bradley, How Many Children Had Lady Macbeth, an essay published in 1933 by L.C. Knights, On the Knocking at the Gate in Macbeth 1823, an essay by Thomas De Quincey, The Wheel of Fire, Interpretations of Shakespearean Tragedy 1930, The Imperial Theme, The Shakespearean Tempest, The Crown of Life 1947, Shakespeare and Tolstoy 1934 by George Richard Wilson Knight.